Today I'm going to start with a sample paper, one sample paper of class 9 term 2. This is the latest sample paper according to new CBSE syllabus. Okay, yeah, form. And as you know it very well, here we have 14 questions which is divided into 3 sections. Section A, B, and C. Okay, now in section A, we are given 6 questions of 2 marks each, in which 2 questions comes with internal choice. In section B, 4 questions, 3 marks each, and 1 choice is given as an internal one. Next one, section C, comprises of 4 questions of 4 marks, and internal choice has been provided in how many questions? 1 question. Okay, only in this way. And now we are going to solve it one by one. What he said, find the value of k. I'm going to start the first question. If x minus 1 is the factor of this, देखिए कितना easy question है, and how we are going to manage this question. Now we know that if x minus 1 is the factor, then we can say this polynomial must satisfied x is equal to 1, or otherwise I can say कि here p1 is definitely equal to 0. Now what we can say, you can send me the message. सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. कोई बात नहीं बच्चे, हो जाएगा सेटिंग. ओके, जस्ट वेट. ओके सर. So you can see p1 k1 minus 3 1 plus k, or I can say 2k minus 3 is equal to 0, and in this case I can say k is equal to 3 by 2. This is the answer. Got my point? ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा, which we are going to solve here. Okay, so this is the first question in this category. Now come on to the second question. In second question, he said, check whether x plus 2 is the factor of this or not. Now what is the simple process to solve? Let px is equal to x square minus 7x and minus 18. What we can say, x plus 2 is a factor, that means x is equal to minus 2 must satisfy the polynomial. तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे बच्चे, minus 2. Here you will get 4 plus 14 minus 18. So we can say this is equal to 0. हाँ जी, क्या बोल सकते हैं अभी आप? Can we say yes or no? Yes, sir. Sir, it is a factor. Yes, sir. Yes. So we can simply say yes, x plus 2 is the factor of the given polynomial. Come on to the next one. And he said 1500 families with 2 children were selected randomly and following data were recorded. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे.
ये 1500 families पे data survey is there, and this is the collection of data. अच्छा, tell me the name of this topic. So probability. 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 Very good. So this is from probability. Now with two girls in a family, 475, one girl, 814 families, zero girl, 211 families. Now he said, compute the probability of a family chosen at random having, what he said, two girls. क्या करेंगे बच्चे? So 475 by 1500. Yes, 475 by 1500 is the answer. And for one girl, Sir, 814 by 814 by 1500. 814 by 1500. I think this is the easy one. है ना easy? चलिए. Come on to the next one. Now, if you can see this question, this is also the case of probability. An unbiased die is thrown. देखो, when you are throwing a die, the sample space is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now, what he is asking you, even number. हाँ जी. So 3 by 6, which is 1 by 2. Yes, 2, 4, and 6 are the even numbers. So favorable cases are 3, and total number of cases are 6. So we can simply say 1 by 2. Got it? Come on to the next phase. Even prime number. So 1 by 6. Yes. Check कीजिए बच्चे. Only one number is even prime number, and that is 2. So I can say 1 by 6 is the only even prime number. Got it? तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या है, वैल्यू है, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं बच्चे, कुछ थोड़े बहुत डिफिकल्ट भी हो सकते हैं. अब चेक कीजिए. ही सेड इन अ पैरेललोग्राम द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री, देन फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स. देखो, एक पैरेललोग्राम है बच्चे, and in that parallelogram one angle is, क्या लिखा हुआ है, 60 degree. And he said find the remaining angle, that means this, this, and this. And how we can find it out? बड़ा simple सा question है. This is angle A, this is B, this is C, and this is D. Now tell me what we can say about this angle C. Sir, it will be 60 degree because of opposite angles. Yes. देखो, in parallelogram we know that opposite angles are always equal. Therefore, this is 60. And what about B? So they are forming a conterior angle, so the sum will be 180 Yes. degree. The sum of two adjacent angles of a parallelogram is equal to 180. Therefore, this is equal to 120. Now, B and D are vertical opposite angles. So this is also equal to 120. So I think this is the easiest one. Okay. Acha, chaliye. Next question comes from the chapter. Which one? Constructions. So I'm just drawing the angle. He said, draw an angle PQR 60 degree. So first of all, what you can do, just break a line segment. ये आपने geometrical instrument के साथ करना है बच्चे. Now from this point, mark an arc. Now from this point with same length, okay, आगे जाने की जरूरत नहीं, ये 60 होगा. Now draw an angle this. Now give the name this as P, this as Q,
and this as R. अब आप क्या करेंगे? Angle bisector. Now how we can draw the angle bisector? From this point T1 and this point T2. From this T1 angle, from this T2, this one. Got my point? This is called angle bisector. T1 से एक आर्क बनाइए, T2 से एक आर्क बनाइए, और दोनों के बीच में से ये लाइन क्या कर दीजिए, पास आउट कर दीजिए. Okay, PQR, and this is known as QA, angle bisector. And after that you can draw the steps of construction if it is asked to you. Now come on to the next question. हाँ जी, chapter, which chapter? The surface area and volume. Yes, he said the height of a cone is 16 centimeter. This is the cone, and height is given to you 16 centimeter, and the base of the radius is 12 centimeter. Find the curved surface area of the cone. Now tell me, what is the curved surface area? Pi RL. Pi Yes, RL. that is pi RL. And what is not given here? Sir, L. L. And L is this one. Now how we can find out L? We can find L as 12 square this square. Got it बच्चे? यहां से किसकी वैल्यू हो गई? L की वैल्यू. Now use pi RL. हो जाएगा? Yes, are you getting my voice? Yes, Sir, Hmm. sir, Yes. 16 square is not 196, sir. It is 256. 256. That's good. 256 it becomes 400, और 400 का आंसर क्या होता है बच्चे? 20. तो 20. now we can solve it. I want to check that कि कितने का. अलर्ट रहिए बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि सर कर रहे हैं तो हम देखेंगे. ठीक. Now put the value of pi as 3.14. It is given to you. R is 12 centimeter and L is 20. Solve it and you will get the required answer. Okay. Now I start with section B. ये section A के questions थे बच्चे. Now I'm going to start with section B. Now check it how we will solve this. Now in section B, he said factorize this. हाँ जी, कैसे factorize करेंगे बच्चे? कल आपको याद होगा, in the last session we have done one thing, hit and trial method. Hit and trial method. So in that particular method 20, what we have done, 20 को किससे divide कीजिए? How many factors of 20? They are 1 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 5. Now what I can say, 20 के क्या क्या फैक्टर होंगे बच्चे? ये तो हम सबसे पहले इसमें ट्रायल करते हैं कि हाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशंस. ओके,
तो सबसे पहले मैं इसमें ट्राई करूंगा 1 या -1, एक कोई ना कोई एक वैल्यू ट्राई करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें 1 पुट अप करते हैं, 1 + 13 + 32 + 20, this is not equal to 0. Okay, but when I put x is equal to -1, so we got -1 + 13 -32 and +20. This is equal to 0. So we can say x is equal to -1 is the 0, or we can say x + 1 is the factor. याद है कल मैंने आपको एक रूल बताया था, जीसीडी, सॉरी, हॉर्नर मेथड। Yes, sir. तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, अदरवाइज फिर आप सिंपल डिवीजन के साथ भी जा सकते हैं, जैसे हम सिंपल लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते थे, लाइक दिस। तो यू कैन राइट इट एज x³ + 13x² + 32x + 20 divided by x + 1। याद है? अब हम इसको क्या करेंगे, x² लॉन्ग डिवीजन कैंसल्ड, 12x², 32x, 20 प्लस 12x अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 के साथ, 20x + 20 डज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चे आपके पास क्या आया, 1 फैक्टर इज x + 1, and now we can factorize this term। आई थिंक इसके फैक्टर आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और यू कैन फाइंड इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दे बिकम्स x + 2 and x + 10। आर यू गेटिंग मी? आई नो बच्चे थोड़ी सी नेट में डिस्टरबेंस है, बट आई थिंक आप तक हम पहुंच रहे होंगे। Now come on to the next question, question number 7, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यू विल फाइंड वन थिंग। ही सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z होल स्क्वायर okay when x² + y² + z² is given to you, xy yz zx plus this is given to you। तो बच्चे आई थिंक आप सबको याद होगा ये फार्मूला, x + y + z होल स्क्वायर, which is known as okay, check my point, x² + y² + z², इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, 20, 20. तो we put it 20। next 2 times xy yz zx is equal to 25, तो we can say 20 + 50 which is equal to 70। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास आंसर भेज दिया पहले ही, दैट्स ग्रेट। Come on to next phase।
The dimensions of cinema hall are 100, 50 and 18 meter. How many person can sit in a hall if each person require 150 meter cube of air? Haji. Can anybody from you will guide me how we will get this? So first we can find the volume of the cinema hall. Yes, and because it is a cuboid, so how we will move to find out the volume? So L into B into H. Yes, the volume of the cinema hall is L into B into H, which is equal to 100, 50 and 18 meter cube. हो गया? Now one person required कितने बचे? 150. तो हम क्या करेंगे इसको? 150 के साथ क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे. तो 150 के साथ जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो इट बिकम्स 3. Sorry. And here is 6. नहीं मल्टीप्लाई ना करो बच्चे, पहले कैंसिल कर लो उनको. ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो दिक्कत आ जाएगी. तो यू विल सिंपली गॉट हाउ मेनी पर्सन सिट इन अ सिनेमा हॉल? 600. 600. देखो वो वॉल्यूम दिया गया था सिंगल पर्सन का, तो हमने टोटल को सिंगल पर्सन के वॉल्यूम से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. तो वी गॉट टोटल 600 persons. Okay, come on to next phase. And next question is, he said, if a lateral surface area of a cylinder, now listen me, what is lateral surface area? Curved surface area. Curved surface area. And we know that curved surface area of a cylinder is known as 2 pi RH. It is given to you 94.2. And its height is कितनी दी हुई है बच्चे? 5 सेंटीमीटर. तो हम इसको h को क्या लिख देते? 5 centimeter. Now what he said, find the radius of the base. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चे? 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7. r की वैल्यू कितनी दी गई है वो हमें फाइंड आउट करनी है. एंड व्हाट इज h? 5. एक चीज देखना बच्चे, मैं यहाँ पे एक चीज की गलती कर रहा हूँ, बताओ क्या? Sir, it is written that use pi is equal to 3.14. Yes. So instead of 22/7, we can use 3.14. Now, how we will find out the value of r? 94.2 divided by 3.14, 2 into 5. तो इनको आपने क्या करना है बच्चे? कैंसिल करना है. Okay. Sir, so r is equal to 3 centimeter. r is equal to 3 centimeter. Now check it. You got r which is equal to 3 centimeter. You got h which is equal to 5 centimeter. ये भी आपके पास हो गया. और आगे आप क्या करने जा रहे हैं? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या था बच्चे? पाई R square h. r square h. तो फिल कीजिए इनकी वैल्यूज को. पाई इज इक्वल टू फिर से 3.14, r square is equal to 9 and h is equal to 5. Find out कर दीजिए, you will get the answer.
The 141.3 centimeter cube. ठीक, चलिए बहुत अच्छे। सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट्स नहीं बोलने बच्चे, यूनिट्स बी ऑलवेज देयर। ओके, तो वो आपके पास बनेगी। लीजिए, मैं एक क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे, तो पूरा प्रॉपर तो नहीं बना पाऊंगा, बट आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ वी विल डू दिस कंस्ट्रक्शन। याद है व्हाट ही सेड ड्रॉ दिस ट्रायंगल। तो हम इस ट्रायंगल को बच्चे अभी करेंगे, एंड आई थिंक आप सबको आती होगी ये कंस्ट्रक्शन, बट फिर भी एक बार देखिए। ही सेड टेक BC as 3.8। तो हमने यहां बच्चे BC ले ली, which is 3.8। okay, now draw an angle 45 degree। आई थिंक आप सबको पता होगा, पहले 90 आएगा, 90 का फिर मिडल करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 45 आएगा। एंगल B is 45 degree। now what he said, AB and AC is 6.8। बच्चे आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, फ्रॉम दिस पॉइंट B मार्क एन 6.8। इसको मैथमेटिकली हम A डैश बोल देते हैं फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ जॉइन AC विद द हेल्प ऑफ स्केल। आगे का स्टेप आप बताएंगे, एनीबॉडी? Sir, we'll take a radius of 6.8 centimeter on the compass. Yes, from this C mark and we can draw perpendicular bisector बच्चे। ठीक, the line will pass through this perpendicular bisector means 90 degree। now this point is known as your A। इनको आप ज्वाइन कर देते। now this particular triangle which I am marking right now is the triangle which is following all the given condition। got my point? तो ये वो ट्रायंगल है जो हमारी फॉर्मेशंस को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। गॉट इट? अच्छा, हमने जब हम इन क्वेश्चंस को कर रहे थे आई थिंक, तो आप सबको याद होगा बच्चे, ठीक, कि हमने इन ट्रायंगल्स इसको प्रूव भी किया था कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। याद है ना? कि इस फॉर्मेशन को हम किस तरह से क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि हाँ ये है वही ट्रायंगल। चलिए, कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे बच्चे, थोड़े से लाइट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट क्वेश्चंस तो हमें सॉल्व करने ही है। तो कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन C। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। चलिए, तो आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ड्रॉ द circle, and what is given to you, this is AB and this is CD। ठीक, एक AB है, एक क्या है, CD। ठीक, and both the chords are equal। now we will this is the center which is O, we can join OA and OB, we can join OC and OD। now we want to prove that angle X is equal to angle Y। और आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता।
चेक कीजिए हाउ वी विल डू दिस. याद है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ट्रायंगल OAB and then we will take triangle OCD. OAB and OCD. अब हम क्या ज्वाइन करेंगे बच्चे? OA is equal to OC. Then OB is equal to OD. ओके और लास्ट में हमें क्या दिया हुआ बच्चे? Sir, AB is equal to CD. AB is equal to CD. ये हमें गिवन था. तो what we can say by SSS these triangles are congruent. Yes, sir. Therefore I can say angle X is equal to angle by with the help of which property? CPCT. CPCT. Now angle X is the angle made by chord AB and angle Y is the angle made by the chord CD. From that point of view I can say angle X and Y are equal. Got my point? हाँ सर. चलिए आगे मूव करते हैं बच्चे. And check it. Question 12. हाँ जी. Question number 12. In a parallelogram ABCD, देखिए क्या दिया हुआ E and F are the midpoint. तो midpoint means उससे बचे AE is equal to EB and otherwise DF is equal to F. ये दोनों आपको क्या है? गिवन है. फिर से चेक कर लीजिए. AD is equal to this one and this one. आगे उसने क्या कहा है? Show that the line segment AF and EC. देखिए क्या कह रहा है? AF this one and EC trisect the diagonal. Trisect the diagonal means बच्चे we want to prove that PP, PQ and QB they all are equal. हमने ये वाली वैल्यू क्या करनी है? प्रूव करनी. हाँ जी. कैसे करेंगे? याद है एक हमने थ्योरम की थी, उसी पे आपको थोड़ा सा लेके आऊंगा. एनीबॉडी कि हम इसको ऐसे करेंगे? Midpoint theorem. Yes, midpoint theorem, which is very good. Now tell me which equation we will take initially. Sir, can I tell? Yes. Sir, we know that ABCD is a parallelogram. So AB will be equal to CD. बच्चे वो तो हमें पता है because it's a parallelogram. AB is equal to CD. So sir, half of AB is equal to half of CD because E and F are midpoint. So AE is equal to CF.
देखो इसमें एक सिंपल से फॉर्मेट के बिल्कुल आपके एग्री कर रहा हूं, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी इज गिवन टू मी. नाउ E is the half of AB and F is the half of DF. So I can say that AE, EB, DF and FC, these four parts are equal. Okay, all the four parts. If you can see that, so I will explain it again. This part AE, EB, FC and DF, these four parts are equal. Okay, now what we can prove next? Next check कीजिए बच्चे. तो बिल्कुल अभी अभी आप में से किसी ने बताया था, तो आई कैन से दिस FC इज इक्वल टू AE. हाँ जी, आगे बाकी भी कोई ट्राई करो भी. आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस सर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुक का. तो हमने AE इज इक्वल टू क्या फिल कर दिया, FC क्या कर दिया, इक्वल कर दिया. अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अब इसमें होने जा रही है. नाउ इफ FC इज इक्वल टू AE, तो ये पैरेलल तो पहले से ही थे. तो कैन आई से कि दिस क्वाड्रिलेटरल AFCE Sir, it is a parallelogram. इट्स अ पैरेललोग्राम. हो गया ना पैरेललोग्राम? ओके, नाउ एक और चीज देखिए बच्चे. अब मैं आपको एक और क्वेश्चंस पे लेके आता हूं इस ट्रायंगल. तो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस ऑल एंड नाउ आई एम शोइंग यू ट्रायंगल दिस. इसको देखिएगा, D, Q and C. Okay, this line is parallel to this one and check कीजिए F is the midpoint. So here P is also the midpoint. So what I can say, DP is equal to PQ. अब एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिए, if we can start with this triangle, so you will check this line is parallel to this one, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम के पार्ट्स हैं. देखो पहले हमने प्रूव की थी ना पैरेललोग्राम. नाउ E is the midpoint, therefore Q is the midpoint of PP. So I can say BQ is equal to PQ. Now from these two parts, what I can say, DP is equal to PQ is equal to BQ. अब नोट कीजिए मैंने कौन कौन से पार्ट प्रूव कर दिए. DP, this one, PQ and BQ, तीनों पार्ट्स बचे इक्वल हो गए. तो वी कैन से आवर डायगोनल इज ट्राइसेक्टेड. तो इसमें बच्चे सबसे जो बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट था वो ये था कि आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन. इसमें सबसे पहला पॉइंट विच यू आर गोइंग टू प्रूव वो ये था कि दिस इज अ पैरेललोग्राम. बस जब आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाए. चलिए तो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन करते हैं बच्चे, हाउ वी कैन सॉल्व इट. आई थिंक ये आप सबको आता होगा. The angles of the quadrilateral are, what we can say, the first angle is 3x, 5x, 9x and 13x, and the sum of the quadrilateral is 360. 360. So what I can say, x is equal to 360, or I can say x is equal to 12. आगे क्या होगा बच्चे आप सब जानते हैं. Put x is equal to 12 in this, 36, x is equal to 12 in this. Next angle is
60. Next angle is 108. Next angle is The 156. 56. These are the angles. Got it? Very good. बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेज दिए मेरे पास. And here is the question. बच्चों आपको दो क्वेश्चन I think you know it very well कि आपको 2 questions किस टाइप के आने हैं. Case study. Case study question is there, and here is the first question from that case study part, and what is given to you. Check कीजिए. The great stupa of Sanchi is one of the oldest stone structure in India and an important monument of Indian architecture. It was originally commissioned by the Emperor of Ashoka. वो सारा कुछ उसने आपको दिया हुआ है, ठीक है. पूरी स्टोरी पढ़ लीजिए. A big hemispherical dome with a cuboidal structure mounted on it. Dome is mounted on a cylindrical base having the path. तो आप डायग्राम देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से. He said, calculate the volume of the hemisphere of the dome if the height of the dome is कितनी दी हुई है बच्चे? 21. तो आपको पता है कि इन अ हेमिस्फीयर जो हाइट होती है एक्चुअली वो किसका रोल प्ले करती है? Sir, radius. Yes, sir. Radius. And we know that the volume of the hemisphere is equal to 2/3 pi r cube. So what you have to done here, just put up the values of pi and r cube. 21 into 21 into 21. ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. You will get centimeter cube as a volume. Okay, come on to the next one. If the cylindrical base has a radius 24.5 cm, ये cylindrical base है बच्चे. Find the area of the प्रदक्षिणा. हाँ जी, ये कैसे फाइंड आउट करें? ये किस चीज को पूछ रहा है आपसे? यस. Sir, the curved surface area of the base. The curved surface area of the Cylindrical base. cylindrical base. तो वो क्या होता है बच्चे? 2 pi RH. हाँ, नो 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 नो, बस यहीं पे गलती होगी. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. देखिए क्या लिखा हुआ है. इट वॉज ओरिजिनली कमीशन. चलिए वो भी था ओल्ड स्ट्रक्चर अशोका. A big hemispherical dome with a cuboidal structure mounted on it. Dome is mounted on cylindrical base. देखिए cylindrical base था और उसके ऊपर क्या बनाया गया? डोम बनाया गया. Like this हो गया ना, जो आपको पूरा दिखेगा इस तरह से. And what he said, if a cylindrical base has a radius 24.5, तो चलिए ये हो गया. Find the area कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे बच्चे हम इसमें? Sir, pi r square h. बच्चे वो तो वॉल्यूम हो जाता है. Sir, pi r into r plus h. देखो इसने क्या कहा, इट वाज ओरिजिनली कमीशन्ड बाय. अच्छा एक चीज आपने देखना है,
हमने क्या फाइंड आउट करना है कि ही सेड, देखो एक दोनों में ना डिफरेंस, इसको ना आप इस तरह से देखिए क्वेश्चन, आपके पास सिलेंड्रिकल क्या है, ये हुआ सिलेंड्रिकल डोम जो ऊपर से दिख रहा है, ठीक। अब उसके ऊपर एक लिखा रखा क्या गया है, एक हेमिस्फीयर रखा गया है इस तरह से, ठीक। आपको बच्चे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला जो बाकी बचेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चे हम, उसके लिए सबसे पहले तो हम नीचे वाले सिलेंडर का अपर पार्ट फाइंड आउट करेंगे, वो पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, और माइनस फिर जो हमारा स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल डोम है उसके बेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे, दैट इज दिस वन। अब इसमें से पाई क्या कर लिया जाएगा कॉमन, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे बताने लगा हूं व्हाट इज r1 एंड व्हाट इज r2। अब देखिए जो सिलेंड्रिकल डोम था वो कितना था, सॉरी हेमिस्फेरिकल डोम था वो था 21 रेडियस का, और ये कितने का है 24 का। तो व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट इट एज 24.5 होल स्क्वायर माइनस 21 होल स्क्वायर। तो ये उसका क्या आएगा, एरिया आएगा। आर यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? देखो आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट कीजिए, एक डायग्राम दिखाऊंगा, देन यू विल फाइंड इट कि इस तरह का ये क्वेश्चंस आपके पास बनेगा। नेट अभी वर्किंग में नहीं आ रहा बच्चे, हाँ अब देखिए ये वाला जो आपके पास इमेजेस दिख रही, चेक कीजिए, ये इस तरह का था बच्चे कि आप सिलेंडर के ऊपर क्या रख रहे हैं, एक हेमिस्फीयर रख रहे हैं, ये अगर ऊपर रखा हो, ठीक, इस डायग्राम में या आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, अभी अगर आप इसको, मैं दोबारा से आपके पास इस क्वेश्चन को चेक करूं, तो ये क्वेश्चन इज लाइक दिस वन, ठीक, कि आपके पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर आपने ये हेमिस्फीयर रख दिया, तो ये वाला एरिया बच गया जो परिक्रमा के लिए बचेगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। गॉट इट? चलिए आगे आते हैं बच्चे, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजी है। एक ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसकी हमें क्या दी गई है, इक्वेशन दी गई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम 4 सेकेंड टू 10 आफ्टर इट इज लॉन्च। तो बच्चे आप क्या करेंगे, पहले पहले आप इसमें P10 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आप उसमें P4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। P10 की वैल्यू फाइंड आउट होगी 6 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10 प्लस 1 माइनस
दूसरी क्या होगी 6 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 1, तो दोनों का डिफरेंस होगा, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। अब ये आप मेरे को बताएं, हाउ विल यू डू दिस फैक्टराइज? So splitting the middle term. Splitting the middle term, that's very easy. And how we can split it? It's The 60 minus 1. 60 माइनस वाला गड़बड़ हो जाएगा बच्चे, चेक दिस वन। देखो अगर आप 6t माइनस प्लस 1 करोगे तो ये हो गया माइनस 5t, इट्स ओके, बट इनकी प्रोडक्ट देखो कहाँ जा रही है, तो दिस इज द बेस्ट सुटेबल। टेक 3t कॉमन, t minus 2, टेक minus 1 कॉमन। ओके 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 ओके, एक गड़बड़ मेरे से भी हो गई इधर, यहाँ पे मैंने 3t करना था बच्चे, तो यहाँ पे आएगा 2t minus 1, तो when I take minus 1 it becomes 2t minus 1, so two factors are 3t minus 1 and 2t minus 1. Have you got this? Yes, sir. तो बच्चे ये आपका एक पूरा क्या था, सैंपल पेपर था which you are going to solve in your coming examination. आपको मैं अभी ये सेंड कर रहा हूं and you will also find out the answer along with this question paper. Okay, now your queries.